एक निगाह फोक पे डालिए। फोक का हमारा रूरल एरिया में एरिया डार्क एरिया जो होते हैं ना, जहाँ पर बिल्कुल मास मीडिया नहीं जाता, वहाँ पर हमने ऑलमोस्ट ट्राई टू कवर। In 1 year we reached to about 1 crore plus people. The next 4 panels are posters which students have prepared. We are putting an exhibition which shows the different type of posters. थोड़ा आगे थोड़ा और आगे Yeah, this one is Tamil language business, and that's Mumbai. We go ahead and and right from the face had no nothing, no filters. This is Nagaland. No youth and men actually are we did not restrict them in that way. We are in the way of Chandigarh, Haryana, and second there, Goa. All across India, like collecting posters, slogans. This way also we, in a way, the youth energy is actually directed in the right way. They're putting it here, not getting such things. ओ भाई थोड़ा साइड लेना। This was actually the competition was held in international. And so displaying it on national. We also displayed it during what they say. We tell them that whatever they do, Can we? Mumbai Society has been founded since 1998. One of the only city because we are considered as an epicenter for HIV/AIDS. No, not still. We have been able to reduce the transmission and the cases. We have around 116 integrated counseling at district centers. Pregnant women are being tested. Generally around 300 women are found positive. We have started on lifelong ART so that the babies don't get the transmission and women also are free of AIDS disease. We have blood safety. Out of 58 blood banks, 23 blood banks in Mumbai are supported funds. There are blood mobile vans where the camps are held at various locations. And around 94% of blood collection in Mumbai is through voluntary donors. And our youth are playing an important role. There were around 94 camps held last year with the sexual and reproductive health is one of the important components because people who suffer from STD are the ones because of their high-risk sexual behavior can get infection of HIV also. So we have 47 STD clinics all over Mumbai in medical colleges and all the hospitals. The targeted interventions for high-risk groups, that is commercial work, sex workers, men having sex with men, transgenders, IDUs. So we have different of their own community-based organizations and NGOs who work around them for prevention as well as for condom distribution and getting them regularly for medical checkups. चलिए इसको एक या दो लड़के गर्ल चाइल्ड के इशू में इनको आप ध्यान रखिए। मैं सोच के बताता हूँ। यस यस डेफिनेटली। So who can be our ambassador? Yeah, I'll just figure out who's just got vulnerable. सर सबसे पहले ये बोलेंगे। ये एड्स जागृति का प्रोग्राम है और
आज महाराष्ट्र में और भारतवर्ष में एड्स की जागृति होना बहुत ज़रूरी है, विशेषतः युवा वर्गों में। इसके लिए हमारे जो युवा एक्टर है बाजीराव सिंघम, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। इनके द्वारा ये संदेश युवकों के दिल में होना चाहिए कि हम लोग एड्स से बचें। तो आज विवेकानंद जी का बर्थडे है, तो नेशनल यूथ डे है, और यहाँ पे आप जितना काम देख रहे हैं ये सब आज जो बदलाव आया है हमारे देश में, और एड्स की जो नंबर्स हैं वो इतने कम हुए हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो, वो आई थिंक इन सबका कंट्रीब्यूशन है, और यूथ जो साथ में मिला है उनका कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा था कि यूथ इज़ द ड्राइविंग फोर्स, तो आज के दिन आई थिंक सही दिन है जिस दिन हम ये टॉपिक एड्स का इसके बारे में बात करें और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें। अच्छा, कह सकते हैं कि नए साल में नई शुरुआत है। आई थिंक हर साल नया साल होता है और हर रोज़ नया साल होना चाहिए, तो हर रोज़ एक नई शुरुआत होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे युवाओं को क्या सीख देने वाले हैं आप स्टेज पर? हम लोग सीख देने वाले कोई नहीं होते, बट जो फैक्ट्स हैं और जो चीज़ें लोगों को पता नहीं है, मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में लिटरेसी का है। लोगों को पता नहीं है कि इसकी एड्स होता कैसे है, इसकी प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, और एड्स का पेशेंट सोसाइटी में कैसे जीता है, और उसका कोई रीज़न नहीं है कि उसे ऐसे जीने की ज़रूरत है, क्योंकि एड्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को छूने से या किसी ऐसी वजह से हो जाए, या मच्छर के काटने से या ऐसे हो जाए। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने दें और उसे आउटकास्ट नहीं करें। आपको लगता है कि सेक्स एजुकेशन जो है स्कूल में भी होना चाहिए? आई एम श्योर होना चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज आजकल इतना ज़्यादा एक्सपोजर है बच्चों को, हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा मालूम है इंटरनेशनल इंटरनेट और इस सब के ज़रिए आप रोक नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर वो सही रास्ते से सीखें और सही ज़रिए से सीखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पीछे अरे बाबा पीछे आना बाबा। सर थोड़ा बैठ गया है तो अच्छा है। सर प्लीज सर चला वरती आता सेल्फी या सेल्फी मैडम सेल्फी मैडम सेल्फी। अरे वर चला ना वर यार प्लीज, चला प्लीज। म्हणूनच महर्षी दयानंद महाविद्यालय NSS युनिट आणि RRC यांच्या संयुक्त विद्यमानाने
अभिमानाने सहर्ष आणि सविनय सादर करीत आहोत पथनाट्य एड्सला जाणा नमस्कार. आता सध्या आपल्या देशात एचआयव्हीचा प्रसार जोमाने होत आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे एचआयव्ही बद्दल असलेली अपुरी माहिती आणि गैरसमज. म्हणूनच सरकारने सगळ्या शाळा आणि महाविद्यालयामध्ये लैंगिक शिक्षण सक्तीचे केले आहे. या लैंगिक शिक्षणाचा वापर जनजागृतीसाठी नक्कीच होईल. धन्यवाद. नमस्कार मुलांनो. तर आपण सुरुवात करणार आहोत आपल्या कवायतीपासून. चालेल. 1 2 3 4 5 3 2 1. तर शाबास मुलांनो. तुम्हाला माहिती आहे आज आपण खेळणार आहोत एक नवीन खेळ. लगोरीचा खेळ. HIV एड्सची लगोरी. हो. तर मुलांनो एचआयव्ही एड्सची लगोरी हो. ती कशी? मी तुम्हाला काल गृहपाठ दिला होता आठवतंय? मुलांनो या आहेत HIV एड्सच्या लगोऱ्या. तुम्ही एक एक लगोरी काढायची आणि एक एक कारण मला सांगायचं. चालेल चालेल चालेल. तर मित्रांनो ही होती एचआयव्ही एड्सची पहिली लगोरी. एकापेक्षा अनेक व्यक्तींशी असुरक्षित लैंगिक संबंध ठेवल्यामुळे एचआयव्ही एड्सची लागण होऊ शकते. तर ही होती HIV एड्सची दुसरी लगोरी. दूषित सुया आणि सिरिंजचा वापर केल्यामुळे HIV ची लागण होऊ शकते. तर मित्रांनो ही होती HIV एड्सची तिसरी लगोरी. HIV बाधित रक्ताचा वापर केल्याने HIV एड्सची लागण होऊ शकते. तर मित्रांनो ही होती एचआयव्ही एड्सची चौथी लगोरी. एचआयव्ही बाधित गर्भवती मातेपासून तिच्या होणाऱ्या बालकास एचआयव्ही एड्सची लागण होऊ शकते. ते शाबास मुलांनो. तुम्ही ही लगोरी तुमच्या आयुष्यात नेहमी लक्षात ठेवा. यातली एक जरी लगोरी तुमच्या आयुष्यात निर्माण झाली तर तुमच्या आयुष्याचा काही टिकणार नाही. कॉमनवेल्थ गेम्स. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल. 2015च्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेत आपल्या सर्वांचे स्वागत स्वागत स्वागत. तर आजचा आपला पहिला सामना आहे कबड्डीचा. माझ्या एका बाजूला आहे एचआयव्ही एड्स वरील विषाणू. तू तर मला पण आउट करू शकत नाही कारण मी लग्नानंतर एकाच व्यक्तीसोबत एकनिष्ठ सुरक्षित लैंगिक संबंध हे तू तर मला विसरूनच जा. कारण डॉक्टरांकडे गेल्यावर मी सुरक्षित आणि निर्जंतुक सुयांचाच आग्रह धरतो. तर पाहिलंच मित्रांनो एचआयव्ही एड्स वरचे पूर्णपणे परिणामकारक अशी लस किंवा कोणताही औषध उपचार नाही. त्यामुळे प्रतिबंध हाच एक उपाय. नमस्कार. एक नवीन प्रयोग म्हणून कोण बनेगा करोडपतीमध्ये मी विजू वाघे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. आज आपल्या स्टुडिओमध्ये करोडपती बनण्याचं स्वप्न घेऊन आलेले आहेत सुपरहिट मराठी सुपरस्टार मकरंद अंदाजपुरे.
मंच पर आमंत्रित करती हूँ the chief guest and chairperson Srimati Sneha Lambekar, Honorable Mayor of Mumbai. Special guest Mr. Ajay Devgan, a very favorite actor. He is also the Honorable HIV/AIDS Goodwill Ambassador. Very warm welcome to you, sir. Dr. Deepak Sawant, Honorable Minister, Health and Family Welfare. आपलं स्वागत आहे सर. Shri Ashish Shelar, President BJP Mumbai and MLA. Welcome, sir. Srimati Alka Kerkar, Honorable Deputy Mayor Mumbai. Dr. S.C. Verma, Director, SARC Tuberculosis and HIV/AIDS Center, that is TAC, Kathmandu. Mr. K.B. Agrawal, Joint Secretary, NACO. Dr. Naresh Goyal, Deputy Director General, NACO. Mr. Sanjay Deshmukh, Additional Municipal Commissioner, Western Suburbs. Mr. Kushal Singh Pardesi, Project Director, MSACS. And Dr. Mrs. Padmaja Keskar, Executive Health Officer. The victories with flowers as a token of love and respect. पुष्पगुच्छ देऊन आता मान्यवरांचं स्वागत करण्यात येईल. आदर आणि प्रेमाचा प्रतीक म्हणून त्यांनी या फुलांचा स्वीकार करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या आणि HIV/AIDS चे सदिच्छा दूत श्रीयुत अजय देवगन जी. सम्मान तथा प्यार का ये प्रतीक आपके लिए खास डॉक्टर दीपक सावंत, माननीय मंत्री आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, महाराष्ट्र राज्य. श्रीयुत आशिष शेलार, अध्यक्ष भाजप मुंबई आणि आमदार. माननीय श्रीमती अलका केरकर, उपमहापौर मुंबई. Ladies and gentlemen, as per the Indian tradition, the inauguration of the program will be done by lighting the auspicious lamp. I request all the honorable guests to kindly do the honors. दीपेन लोकान जयति, दीपस्तेजोमयः स्मृतः. चतुर्वर्ग प्रदोदीपन तस्माद दीप यजेत प्रिय. This couplet in Sanskrit translates, the lamp is luminous, its radiance grants victory, its brightness imparts dharma, artha, kama and moksha, that is righteousness, prosperity, pleasure and emancipation. This is the significance of lighting a lamp, and hence a lamp should be lit. Lamp, as we know, is also a symbol of knowledge. जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीप ये ज्ञान का प्रतीक है. The lamp being lit, I request all the dignitaries to kindly take their seats. सर्व मान्यवरांनी बसून घ्यावं ही विनंती. Thank you. And now, may I call upon Mr. Sanjay Deshmukh, Additional Municipal Commissioner, Western Suburbs, for the welcome address. माननीय उपमहापौर श्रीमती अलका केरकर, अशा या कार्यक्रमास जी माहिती आपण दिली त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. Thank you, sir, for providing information on various strategies implemented by MDAX for prevention, control and care support for HIV-infected people in Mumbai, which will certainly be beneficial to all. मी सर्वांना पुन्हा एकदा विनंती करते की त्यांनी शांत राहावं. मला माहिती आहे मोठ्या संख्येत आपण उपस्थित आहात, खूप उत्सुक आहात, पण सर्वांनी जमेल तेवढी शांतता आपण राखूया. And now I invite Mr. K.B. Agrawal, Joint Secretary NACO, for his address. आप सभी से बातचीत करने के लिए, आपको संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ. ऑनरेबल श्रीमती स्नेहा लंबेकर, आज के समारोह की मुख्य अतिथि.
Honorable Deepak Sawant Sahab, Minister for Health for Government of Maharashtra, Shri Ajay Devgan Ji Singham, who is the SAARC ambassador, Shri Ashish Shelkar, Honorable MLA, Shrimati Alka Kelkar, Deputy Mayor, Mr. Deshmukh, the Additional Municipal Commissioner, Dr. S.C. Verma, the Director of SAARC, Dr. Naresh Goyal, DDG of NACO, Dr. Padmaja Kaiskar, PD MDEX. स्पीच जो है वो लिख कर दी गई है. मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, कुछ वर्ड इधर से उधर ना हो जाए, तो मैं एक पैराग्राफ वो पढ़ने की मैं इजाज़त लूँगा आपसे, and then we will talk very closely. I'm very glad to be here today. Shri Ajay Devgan is widely considered as one of the finest actors. So I repeat, as we know, Shri Ajay Devgan is widely considered as one of the finest actors of Hindi cinema. He has won numerous prestigious awards in the film career. He is equally popular actor not only in India, but in the whole world, including SAARC region. On behalf of मेरा हर चलन निराला है. लोग जिन हादसों से डरते हैं, मुझे उन्हीं हादसों ने पाला है. थैंक यू. और अंत में मैं एक बार फिर एमडेक्स, नैको सभी का शुक्रिया अदा करती हूं और राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पे आप सबको हार्दिक बधाइयां. पुढील कॉलेज आहे केसी कॉलेज चर्चगेट. NSS प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सतीश कोलते. प्लीज जागा करून द्या हा जरा, किंवा तुम्ही तिकडनं काढा ना फोटो, म्हणजे इकडनं येता येते, तिथून काढा ना फोटो, तिथून काढा. नाव महर्षी दयानंद कॉलेज परेल डॉक्टर अविनाश कारंडे. गुरुकुल कॉलेज घाटकोपर प्रोफेसर काजल छेड़ा, NSS प्रोग्राम ऑफिसर. रिजवी कॉलेज बैंड्रा डॉक्टर फारूकी, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज. Goodwill Ambassador. Hello everybody, honorable dignitaries, my friends, thank you so much for such a warm welcome. I think सभी ने सब कुछ बोल दिया और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आज जो मीना जी ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, उसके बाद I don't know what I have to say. आज नेशनल यूथ डे है और हम सब अब ये मानने लगे हैं जो स्वामी जी ने तब कहा था कि जो देश का जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज़ यूथ, दैट इज़ यू. तो ये आप लोग हैं और यहाँ जितने लोग जो कुछ बोल रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं ये बिल्कुल इनकम्प्लीट होगा अगर आप इसे फॉलो ना करें और आगे ना लेके जाएं. तो ये काम आप लोगों ने करना है, हम लोगों ने नहीं. और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि हम जैसे एक्टर और स्पोर्ट्स जो के लोग होते हैं उनको आप लोग इतना प्यार देते हैं कि शायद गलती से आप उनकी कोई बात सुन ले. तो मैं ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि ये जो एड्स का इशू है ये सिर्फ
बेसिकली आई बिलीव दैट अवेयरनेस का इशू है और इलिटरेसी का इशू है. अगर सब समझ जाएं, जैसा कि मीना जी ने कहा कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर. इसका प्रिवेंशन बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये बात समझनी है और लोगों को सिखानी है. कई चीज़ें आई थिंक पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, बट ऐसे इश्यूज मुझे लगता है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स तक को सिखाने चाहिए, क्योंकि आज का यूथ अपने पेरेंट्स से बहुत आगे है. अजय जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं बच्चे, तो वी हैव माइक्रोफोन्स इन द ऑडिटोरियम, वी हैव वॉलंटियर्स to pass on the mics. You please raise your hands, identify yourself, the name of the begin. Mic zara chalu kara na, please. Hello. Can you? There's a button. Can you switch it on? Hello. Hello. Okay, you can just try being loud. I'm Sukruti from Sophia College for Women, and I have a question for you. Suppose one of your employees is very enthusiastic, young, and really hardworking, and that employee, you are considering him for a promotion in your organization, and he's really worthy for it, but one day he just walks into your office and reveals his status that he's a HIV positive person. How would you react, and what will be your next step? You know, a situation like this has happened not exactly in my office, but one of our colleagues. And it happened something about 15 to 20 years back. And that time there was not much awareness of AIDS and things like this. And that person died because he was neglected by people, he was pushed away from his family, he was in the hospital, and he thought it was a very big stigma, and he practically died in 6 months. Today the scenario is very, very different, and that is what I would like you to underline and tell people also, that people, AIDS आपको साथ में बैठ के खाने से या एक दूसरे के साथ काम करने से या खेलने से या बच्चों के खेलने से या छूने से बिल्कुल नहीं होते. तो आई थिंक इट्स completely safe, and AIDS is an infection like any other normal infection today. या किसी को कैंसर हो सकता है या किसी को कुछ हो सकता है. तो I don't think you should, it is not a stigma, it's not a taboo, and this first the person who gets it should accept, and the people around him should accept that and take that person with him and go ahead, which the biggest example today is Meena ji, when we heard. अजयजींनी सांगितलं की काही वर्षांपूर्वी असाच काहीसा प्रसंग त्यांच्या. My question is, as you know, there are many myths and misconceptions regarding stigma, HIV and AIDS upon the people in the society. So what do you think that myth and misconception can be a biggest stigma for the society, and how we can overcome it? I think that's the same answer I just gave, same question. Repeat your question again, please. As you know, there are many myths and misconceptions regarding HIV and AIDS in the society. So what do you think that, what should be the step that we can take to overcome it? The step is to create awareness. I just said that AIDS is something जो किसी को हाथ लगाने से, हाथ मिलाने से, छूने से, काम करने से नहीं होता. AIDS, so I think it is very, very normal, and it is like an infection like any other infection जो लोगों को होता है. तो society में कोई, you should not take it as a taboo, or I think you should support that person as much as possible. So this is what you need to spread. लोगों को अभी भी लगता है कि एड्स अगर किसी को है तो आई थिंक उनको भी हो जाएंगे, या उनके नज़दीक जाएंगे, या उनको छूने से हो जाएंगे, या उनके साथ बात करने से हो जाएंगे. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. I think you are completely safe there. जनजागृती करणं हाच उपाय आहे असं अजयजींनी आता सांगितलं. आपल्यासाठी ते खास आलेले आहेत, त्यामुळे though I am proud of it, but I want to ask whether it is safe to donate blood, and should it be a regular practice? I think it's perfectly safe to donate blood, but you should be very careful that where are you donating your blood. It should be a registered
body where blood has to be donated, and because when it is a registered body, you're sure that the syringes are not reused and they're all safe. I think everybody should donate blood, and between the age of 18 to 65. And if you do it every 3 months, it's healthier for you also. And as sir was telling me that, and we were told that with blood donation, so many new, researches and medications come out which we have to import. So I think it's all our duty to donate blood, and that'll solve a lot of things. Thank you, sir. रक्तदान हे जीवनदान आहे, नक्कीच केलं पाहिजे. I know you all are enthused to ask questions, but probably we can take 1 or 2 at the max, and please maintain silence. That would be my request again. Okay, the last, probably 1, 2 questions more. Hello. Sir. Yes, begin. Sir, I am Adarsh from Sydenham College of Commerce and Economics. Sir, sorry for all those confusion, and getting back to the question. Hello. Sir, you being a Hello, SAG hello, goodwill. Sir, am I audible? Yeah, I can hear you. Yeah. Sir, you being the SAG goodwill ambassador of HIV/AIDS, must be aware of the government trying their level best to reach out the maximum population about informing them about HIV/AIDS prevention messages. Sir, how do you think this process can further be accelerated? It can only, as I said earlier, it can be, when I knew a lot about it, but when I visited outside and saw the contribution what you guys have done, and what has happened in the country since 2000, I think it's been fabulous. But it can only go forward if you take it forward. You means the youth. We can only talk about it here, but to create awareness, if you go tell 2 people, and 2 people will multiply to 4 more people, that is how it's going to multiply, and that is the only solution to this. So I think the solution is to be educated on what is HIV and what is AIDS, how it happens, why it happens, how you can prevent it, and make life very, very simple for everybody. That's why I said today's youth needs to do it, and today's youth also needs to educate their own parents who are not educated. That's how you take it forward. Sir, you also being from the film industry, do you think there can be any association possible? I would love to have any kind of association possible. Now that I'm a part of this AIDS SAG Goodwill Ambassador, I would love to discuss with them that what other things I can be a part of and how I can support and take it forward. But again, I will need all your help. So if you guys are with us, then we can all do something about it. Okay, thank you. One last question. This will be the last. Aakhri sawal. I'll give you an example. We are making films, and films are changing. Maintain silence. Films are changing, and we are making films according to your demands, according to the way you all want. Otherwise, you all reject it. So the society is changing according to the youth, and the society will in future change according to the youth. So if in our film industry we have to follow you all and follow your demands, I think it is easier for you all to go ahead and change the whole country, and all the countries, all the SAARC countries, I would say. Thank you for all the motivation.